यस गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब कुछ एक्सरसाइजेज है सॉल्व करने के लिए दैट इज़ बेस्ड ऑन लॉग ऑफ जेड. सो आई एम यूजिंग द फॉर्मूला log z इज इक्वल टू log ऑफ mod z प्लस आयोटा आर्ग्यूमेंट ऑफ z जो हमने लास्ट टाइम किया था. सो उसके बेस पे हम क्वेश्चन ये वाले सॉल्व करेंगे. सॉल्व e द पावर z इज इक्वल टू -2 फॉर z. e द पावर z is equal to -2. Now this can be equal to z is equal to log of -2. If we take log on both the sides, I will be getting this. Next is, what is the log of -2? That is the formula log of mod -2 plus iota argument of -2. So the modulus of negative number is positive, that is 2 plus iota argument of -2. We know that अगर हमारा कोई इंटीजर नेगेटिव है दैट इज़ -2, तो यहाँ से हमारा एंगल बनता है थीटा इज इक्वल टू पाई. सो द आर्ग्यूमेंट ऑफ नेगेटिव नंबर इज पाई इफ दिस इज ऑन एक्स एक्सिस. नेक्स्ट ऑलराइट, बिकॉज ये हमारा प्रिंसिपल नहीं है आर्ग्यूमेंट, सो आई मस्ट राइट पाई प्लस 2n pi where n belongs to the integers. Next, this is log of 2 plus iota 1 plus 2n pi where n belongs to the integer. That's it. अगर हमारी ये प्रिंसिपल ब्रांच होती, अगर हम प्रिंसिपल ब्रांच होती तो हम आर्ग्यूमेंट सिर्फ पाई लिखते. नेक्स्ट सेकेंड इज फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ 1 प्लस आयोटा द पावर आयोटा. अब यहाँ पर हम क्या इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज़ इक्वल टू, हम इसकी एक्सपोनेंशियल की पावर बना रहे हैं लॉग के साथ, लॉग ऑफ 1 प्लस आयोटा की पावर आयोटा. नेक्स्ट, आयोटा मैं इसके लॉग के पीछे लेके आ रही हूँ, लॉग की कोई भी पावर हो तो वो उसके पीछे आ जाती है. सो दिस इज़ e raised to the power iota log of 1 plus iota. नेक्स्ट, अब यहाँ पर हम फॉर्मूला ओपन करेंगे, e raised to the power iota log of 1 plus iota, that is log of mod of 1 plus iota plus iota argument of, because this is principal value so I must write the capital K here, argument of 1 plus iota. So this is the formula for log of complex number, just further equal to e raised to the power iota log mod of 1 plus iota is a square plus b square, that is 1 square plus 1 square, that is 2 root of 2 modulus of a plus b is equal to a square plus b square under the root. We all know that this. So mod of 1 plus iota is root 2 plus iota. Now the argument for 1 plus iota, आप ये नंबर देखिए कहाँ पर है हमारे पास, 1 1, that is 1 and 1. मेरा ये नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है जहाँ पर tan पॉजिटिव होता है. फर्स्ट और थर्ड में tan पॉजिटिव होगा, रिमेंबर दैट. सो दिस इज आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 प्लस आइटा, दैट इज tan इनवर्स 1/1 b over a. which is equal to e raised to the power iota log of root 2 plus iota. tan inverse 1 is pi by 4, मेरी वैल्यू पॉजिटिव होगी. taking iota inside, that is iota log of root 2, iota is -1, that is minus pi by 4. Right. Further, I'm separating the real parts and the imaginary part as e raised to the power minus pi by 4 into e raised to the power iota log of root 2.
which is equal to e raised to the power minus pi by 4. Now हमें Euler's formula remember है, that is e raised to power iota y is cos y plus iota sin y. So I'm opening this. This is cos of log root 2 plus iota sine of log root 2. So hence the principal value for that function is e raised to the power minus pi by 4 cos log of root 2 plus iota sine log of root 2. Next is, should I write Euler's formula again? I have used e raised to the power iota y as cos of y plus iota sine of y in this. Next is, find all the values of 1 plus iota the power iota, also specify its principal value. अभी हमने फंक्शन लिया है, अभी हमने इसके प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट की है, बट अब क्वेश्चन कह रहा है कि ऑल द वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है. ऑल द वैल्यूज़ मीन्स मुझे वो स्मॉल ARG यूज़ करना है इस क्वेश्चन में. सो अगेन दिस इज 1 plus iota the power iota can be written as e raised to the power log of 1 plus iota the power iota, which is further written as e raised to the power iota log of 1 plus iota. Now to open this, e raised to the power iota, this is log of modulus of 1 plus iota plus iota argument of, now I'm using small a instead of capital 1 plus iota. Next, this is equal to e raised to the power iota, log of 1 plus iota is root of 2 plus iota. Now the argument for 1 plus iota, that is, we know that the argument for 1 plus iota is pi by 4, that is tan is positive over the first quadrant, plus I have to write 2n pi here, where n belongs to the integers. Next is e raised to the power iota log of root 2, iota अंदर ले जाइए, this is minus 2n pi plus pi by 4. That's it. Now again separating the real and imaginary part, that is e raised to the power minus 2n pi plus pi by 4 into e raised to the power iota log of root 2, that is e raised to the power minus 2n pi plus pi by 4. Opening this by using the Euler's formula, that is cos of log root 2 plus iota sine of log root 2. So where n is your natural number or integer, sorry, n is your integer, not natural number. So ये आपका आंसर आ गया सारी, all for all the values you put in 1 2 3 4 for all the values आपका ये आपका अब हमें ये वैल्यूज़ आ गई. अब हमें प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करनी है. प्रिंसिपल वैल्यू अभी अभी आपने पीछे देखा था, हमने फाइंड आउट की थी, बट इसी एक्सप्रेशन से हम प्रिंसिपल वैल्यू भी लिख सकते हैं. प्रिंसिपल वैल्यू इज़ इक्वल टू, जस्ट हमने कुछ नहीं करना, हमने बस ये जो एक्स्ट्रा 2n pi है वो हमने स्किप करना है. सो दिस इज़, you skip this and write as expression e raised to the power minus pi by 4 cos of log of root 2 plus iota sine of log of root 2. And if you match these two principal value बिल्कुल सेम है जो हमने पिछले क्वेश्चन में फाइंड आउट की थी, you can
match this as e raised to the power minus pi by 4 cos of log root 2 plus iota sine of log root 2. E raised to the power minus pi by 4 cos log root 2 plus iota sine log root 2. अगर आपको सभी की सभी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है वो फाइंड आउट करके आप प्रिंसिपल वैल्यू इसमें से आप लिख सकते हैं. So the next question is find all the values of iota the power iota also specify its principal value. Just हमने ऐसे ही repeat करना है. So now I am having iota the power iota, which is written as again e raised to the power log of iota the power iota, that is equal to e raised to the power iota log of iota, which is further equal to e raised to the power iota. Applying the formula over here, this is log of mod iota plus iota argument of iota. स्मॉल ए प्रिंसिपल वैल्यू हम इसकी जो आंसर रहेगा वहाँ से हम जनरेट करेंगे. नेक्स्ट e raised to the power iota. What is log of iota? That is 1 plus iota. What is argument for iota? हमने पहले भी एक्सप्लेन किया था. अगर हमारी यहाँ पर है पॉजिटिव वैल्यू और नीचे हमारे पास नेगेटिव वैल्यू है, तो पॉजिटिव वैल्यू के लिए थीटा हमारा पाई बाई 2 होगा और नेगेटिव वैल्यू के लिए थीटा हमारा माइनस पाई बाई 2 होगा. सो आई एम हैविंग द पॉजिटिव वैल्यू दैट इज आर्ग्यूमेंट ऑफ आयोटा. सो फॉर दैट आई विल यूज प्लस पाई बाई 2. So this is iota plus pi by 2 plus 2n pi because of small a. Next is e raised to the power iota. Log of 1 is 0, so this is iota pi by 2 plus 2n pi. Further it is e raised to the power minus pi by 2 into e raised to the power 2n pi iota. That is e raised to the power minus pi by 2 Euler's formula, that is cos of 2n pi plus iota sine of 2n pi. Oh, I'm very sorry. This is, wait. Iota and iota is minus 1. So this is only minus of pi by 2 plus 2n pi. That's it. That is e raised to the power minus of, alright, हम पाई अंदर ही रहने देते हैं. This is your answer. Now writing the principal value. Principal value is equal to, just skip this 2n pi only, that is e raised to the power minus pi by 2. Clear? Alright. Next is find the principal value of iota the power iota, which is same as above. Just we should not write 2n pi now. Iota the power iota is equal to e raised to the power log of iota the power iota, that is e raised to the power iota log of iota, which is equal to e raised to the power iota. Formula is log of mod iota plus iota argument of iota. To find out the principal value, I am using capital A, that is e raised to the power iota. Log of iota is 1 and log of 1 is 0 plus iota. Argument for iota is pi by 2. So this is equal to e raised to the power minus pi by 2.
Next, find the principal value of this. 1 plus iota, the power 1 plus iota can be written as e raised to the power log of 1 plus iota, the power 1 plus iota. That is e raised to the power 1 plus iota log of 1 plus iota. That is e raised to the power 1 plus iota, opening it, log of mod 1 plus iota plus iota. This is principal value, so capital ARG, argument of 1 plus iota. 1 plus iota. Log of modulus of 1 plus iota is a square plus b square under the root, that is simply log of 2 root plus iota. Argument for 1 plus iota is, because this lies in the first quadrant, so this is tan inverse b by a, that is pi by 4. This is tan inverse b over a e raised to the power 1 plus iota. अगर हमारे पास यहाँ पर प्योरली रियल पार्ट होता है या प्योरली इमेजिनरी पार्ट होता है, तब हमारे पास फॉर्मूला माइनस पाई या प्लस पाई बाई 2 और माइनस पाई बाई 2 उसके लिए है. बट यहाँ पर हमारे पास रियल और इमेजिनरी दोनों है, तो उसके लिए tan इनवर्स y ओवर x और tan इनवर्स b ओवर a फॉर्मूला यूज़ होता है. log of root 2 plus iota tan inverse, this is pi by 4. E raised to the power, I am multiplying this first term with whole this term, that is log of root 2 plus iota pi by 4 plus e raised to the power, इसको अलग लिख लेते हैं इंटू करके, e raised to the power iota log of root 2, iota से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे दिस इज माइनस पाई बाय 4. अब हमारे पास जो रियल पार्ट्स हैं वो हैं e raised to the power log of रूट 2, एक ये वाला और एक ये वाला. इसको भी हम सेपरेट करके e raised to the power माइनस पाई बाय 4 लिख सकते हैं. e raised to the power minus pi by 4, e raised to the power iota pi by 4, e raised to the power iota log of root 2. That is combining these two, e raised to the power log of root 2 into e raised to the power minus pi by 4 into e raised to the power iota pi by 4 plus root 2. This is log of root 2. This pi by 4 plus log of root 2. मैंने यहाँ पर सारे के सारे रियल पार्ट्स एक तरफ इकट्ठे किए हैं और इमेजिनरी पार्ट्स एक तरफ इकट्ठे किए हैं. सो इसको मैंने एज इट इज़ लिखा है और इमेजिनरी पार्ट को कंबाइन करके लिखा है ताकि मैं इस पर आइलर फॉर्मूला यूज़ कर सकूँ. दिस होल इज़ योर y. दिस इज़ e raised to the power log of root 2 into e raised to the power minus pi by 4 into this is cos of pi by 4 plus log of root 2 plus iota sine of pi by 4 plus log of root 2. That's it. ये आपका सॉल्व हो गया. नेक्स्ट इज सम मोर एक्सरसाइजेस. प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ 1 माइनस आयोटा द पावर आयोटा.
अब यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे कि अगर हमारा x पॉजिटिव है तब तो हम आर्ग्यूमेंट tan इनवर्स y बाई एक्स ले लेते हैं, बट अगर हमारा x नेगेटिव हो जाता है तब हम उसमें, और y भी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव होते हैं तो हम वहाँ पर माइनस पाई ऐड करते हैं, और अगर हमारा x नेगेटिव व y पॉजिटिव हो जाता है तो हम वहाँ पर प्लस पाई ऐड करते हैं। बहुत स्टार्टिंग में इन माई फर्स्ट क्लास वहाँ पर मैंने सारे फॉर्मूलेस के लिखवाए हुए हैं आर्ग्यूमेंट्स वाले, वो आप चेक कर लेना। सो द नेक्स्ट इज 1 minus iota the power iota. This can be written as e raised to the power, same वैसे ही करना है, log of 1 minus iota the power iota. This is equal to e raised to the power iota log of 1 minus iota. That is e raised to the power iota, applying the formula, that is log of mod 1 minus iota plus iota argument of, because this is principal value, so capital A, argument of 1 minus iota. E raised to the power iota log of modulus of 1 minus iota is root 2 a square plus b square under the root, that is 1 square plus 1 square under the root, that is root 2 plus iota, where this complex number lies. One and minus 1. X is 1 and y is minus 1. So it lies over here. That is, your tan is negative here. So this is minus pi by 4. But here x is positive, so I am not adding plus pi or minus pi. My x should be negative for that. So इसमें minus pi by 4 ही रहेगा. That is e raised to the power iota log of root 2 minus iota pi by 4. Taking iota inside, e raised to the power iota log of root 2, iota and iota is minus 1, this is plus pi by 4. Separating the parts, e raised to the power pi by 4 into, so this is cos of log of root 2 plus iota sine of log of root 2. That's it. This is the solution. Next. अब यहाँ पर मेरे पास x नेगेटिव है, थोड़ा सा चेंज आ जाएगा. So it can be written as e raised to the power log of minus 1 plus iota the power iota. This is e raised to the power iota log of minus 1 plus iota, that is equal to e raised to the power iota, opening this, log of mod of minus 1 plus iota plus iota argument of principal minus 1 plus iota, e raised to the power iota log of root 2 plus iota. Now where this number lies, minus 1 and 1, minus 1 and y is 1. So this number lies over here. Here tan is negative. First और third में positive होता है, third और fourth में negative होता है. So this is minus pi by 4. अब यहाँ पर x हमारा negative है और y positive है. x जैसे ही आपको x negative दिखे, अगर y पॉजिटिव है तो प्लस पाई ऐड करेंगे, और अगर x नेगेटिव पर y नेगेटिव है तो हम माइनस पाई ऐड. आप y का साइन चेक कर लो, x नेगेटिव पर y पॉजिटिव है तो प्लस पाई ऐड कीजिए, x नेगेटिव पर y नेगेटिव आ जाता है तो हम माइनस पाई ऐड करेंगे.
So further this is equal to e raised to the power iota log of root 2 plus iota, this is 3 pi by 4 iota log of root 2, this is minus 3 pi by 4, that is e raised to the power minus 3 pi by 4. Using the Euler's formula for this is cos of log of root 2 plus iota sine of log of root 2. Next, this is the last example, last exercise. दिस इज ई रेस्ट, अब यहाँ पर दोनों चीज़ें नेगेटिव हैं तो हम माइनस पाई ऐड करेंगे. ई रेस्ट टू द पावर log of minus 1 minus iota the power iota, that is equal to e raised to the power iota log of minus 1 minus iota, that is e raised to the power iota, opening the formula, log of mod minus 1 minus iota plus iota, all the values, so I will write small a, argument of minus 1 minus iota, which is equal to e raised to the power iota, this is log of root 2 plus iota, where this number lies minus 1 and minus 1, here where the tan is positive, x is minus 1 and y is also minus 1. So this is plus pi by 4 साथ में 2n pi, where n belongs to the integers. This is e raised to the power iota log of root 2. all right, साथ में because x नेगेटिव पर y नेगेटिव है तो हमें माइनस पाई भी ऐड करना है इसमें. दिस इज माइनस 2n pi, pi by 4 minus pi is minus 3 pi by 4, which is further equal to e raised to the power minus 2n pi minus 3 pi by 4 into e raised to the power iota log of root 2, which is equal to e raised to the power minus 2n, wait, iota and iota is minus 1, so this is minus 2n pi, and after opening this you will get, this should be, wait, e raised to the power iota log of root 2 plus iota pi by 4 plus 2n pi minus pi, iota log of root 2, iota is minus, so this is 2n pi minus 3 pi by 4, which is equal to e raised to the power minus 2n pi minus 3 pi by 4 into e raised to the power iota log of root 2. Alright, this is 2n minus 3 by 4 pi, which is, using the Euler's formula, this is log of root 2 plus, sorry, cos of log of root 2 plus iota sine of log of root 2. That's it. So this is my find all the values. तो ये इसकी सभी की सभी values मिल गई where n is your integers. अगर आपको प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करनी होती तो जस्ट आपको ये 2n पाई वाली टर्म स्किप करनी है और आपकी प्रिंसिपल वैल्यू e रेज़ टू द पावर प्लस 3/4 पाई हो जाएगी, साथ में ये चीज़, ठीक है. सो अगर हमें यहाँ से प्रिंसिपल वैल्यू देखनी है, दिस इज इक्वल टू, हमें
ये 2 एंड पाई वाली टर्म या इससे ऊपर वाला एक्सप्रेशन देख लो, ये टर्म स्किप करनी है. सो दिस इज e raised to the power 3 pi by 4. बाकी cos of log √2 plus iota sin of log √2, where n is your integers. Alright, that's it. Thank you very much.